मुस्तदरक लिल हाकिम किताब मारिफत सहाबा आप पढ़ सकते हैं। हु नरेट हज़रत उम्मुल फदल बिन्त हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा। She narrate, she said once annaha dakhalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. I came in the khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So she said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aytu hulman munkaran laylata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मैंने गुज़िश्ता रात एक ख्वाब देखा है, एक खतरनाक ख्वाब देखा है। Previous night, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I had bad dream. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, Qala ma huwa? Okay, what is it? She said, Qalat innahu shadidun. It's very dangerous. It's very bad dream, Ya Rasulullah. So Rasulullah asked again, Qala wa ma huwa? What is it? Then she replied, Qalat ra'aytu ka anna qit'atam min jasadika quti'at wa wudi'at fi hijri. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मैंने देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। That one piece from your body got cut and placed on my lap. This I had dream, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I am worried, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah says, Ra'aytu khayran, O Ummul Fadl, you saw a good dream. The dream is very good. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained what is the meaning of the dream. Talidu Fatimatu insha Allahu ghulaman fayakunu fi hijrika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says ke soon in the house of Fatima, Khatun Jannat, one boy baby will be born. And that baby will be given into your lap. आपकी गोद में दे दिया जाएगा. So then she witnessed fawaladat Fatimatul Husain. Hazrat Imam Hussain born. Fakana fi hijri, and given into her lap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Haq chaar yaar. Haq chaar yaar. Ya Ali. Ya Ali. Hara Hussain, pyara Hussain. Ya Hussain, ya Hara Hussain, pyara Hussain. Ya Hussain, ya Hara Hussain, pyara Hussain. Ya Hussain. She said, Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, it's happened. Because Rasulullah knew. Rasulullah explained the dream. And then she witnessed. She said that fadakhaltu yawman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. फिर मैं एक दिन came in the khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'tuhu fi hijrihi, and Hazrat Imam Hussain was in the lap of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So जब मैंने देखा, I witnessed, thumma hanat minnil tifatatun. थोड़ी देर बाद, after few minutes, मैंने क्या देखा? فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان من الدموع. The tear was rolling from his blessed eyes. So then I asked in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जब मैंने देखा कि Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की आंखों से आंसू जारी थे, so I asked, qalat faqultu, she said, Ya Nabi Allah, oh the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, bi abi anta wa ummi, my mother and father sacrifice upon you, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मा लका, क्या वजह है, what is the reason ya Rasulullah, why you crying ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that, oh Ummul Fadl, qala atani Jibreel alayhi salatu wassalam. Hazrat Jibreel alayhi salam came, आप तशरीफ लाए, and then फ़अख़बरनी, he told me, आपने मुझे बताया, अन्ना उम्मती सतक़्तुलुब्नी हाज़ा, कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद करेगी. That your ummah will make shaheed this nawasa that you carrying in your lap. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, I asked to Jibreel, faqultu haza, you saying, oh Jibreel, yani Hussain?
So Jibreel alayhi salam replied, Qala na'am, yes, Imam Hussein. So then, wa atani bi turbatin min turbatihi hamra'a. And then Hazrat Jibreel alayhi salam gave me some red soil from that place, from that land where Imam Hussein will be martyred. कि वो उस जगह की मिट्टी भी लाए हैं. Hazrat Jibreel alayhi salam brought that red soil also from that place where Imam Hussein will be martyred. So Alhamdulillah, this is the ilm ghaib of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Imam Hakim आप फरमाते हैं, हाजा हदीसुन सहीहुल अला शर्त शेखैन. Imam Bukhari and Imam Muslim, according to both of them, this hadith is sahih. So this is the hadith. अल-कामिल फित तारीख में ये आपका खुतबा है जब आप मैदान करबला में, क्योंकि each and every time Hazrat Imam Hussein gave the sermon कि you still have time. Oh Yazidiyo, you still have time. That leave the daman of batil and hold the daman of haq. You still have time. इसलिए हम कहते हैं हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, हमारा हुसैन प्यारा हुसैन, हमारा हुसैन प्यारा हुसैन. अल्हम्दुलिल्लाह. So ये था खुतबा हजरत इमाम हुसैन. हजरत इमाम हुसैन said, अय्युहन नास, ए लोगो, ओ people, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल. When he start after the hamd sana, amma ba'd, after the hamd sana, he read one hadith front of the army of Yazid in the ground of Karbala. He says, marra minkum sultan al-jaira, कि ए मेरी उम्मत, this is the फरमान पाक हजरत इमाम हुसैन reading the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the ground of Karbala, कि Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says कि ए मेरी उम्मत, तुम में से किसी ज़माने में जिस शख्स ने जालिम सुल्तान का ज़माना पाया, from you, any time in your era, if you see a hakim, a ruler is the zalim, is oppressor, mustahillal li hurmillah. What kind of oppressor ruler? What kind of bad ruler? The one who make halal haram, the one who make haram halal. ना के सल्ले li ahdillah, जिसने अल्लाह का अहद तोड़ा हो. मुखालिफल li सुन्नति रसूलिल्लाह, जिसने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की हो. The one who went against the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'malu fal ibadi bil ismi wal udwani. And that type of bad ruler, the one who oppress the नेक बंदा, पायस बंदा of Allah subhanahu wa ta'ala, जिसने अल्लाह के नेक बंदों पर जुल्म और बुराई से हुकूमत की हो. फलम युगय्यर मा अलैहि बिफिअलि वला क़ौल. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Imam Hussain says in the ground of Karbala, furthermore my Nana Jan says कि if a person witnessing, he or she witnessing everything, that zalim hukmaran, that zalim hakim is changing the Shariat and crossing the limits of Sharia and is going against the Sharia, and he or she witnessing, and if they don't speak, they kept quiet. If a person फेल से और कॉल से उसने उस हाकिम जालिम हुक्मरान को नहीं बदला, he never did anything, he or she never went against that oppressor ruler, so then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says के काना हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखलहु. फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को उस घड़े में गिराएगा जिस घड़े में उस जालिम हुक्मरान को गिराएगा. Then Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment will throw that person, the one who was keeping quiet, the one who have power to stand against that zalim hukmaran, but he did nothing. So Allah will throw that person also where Allah will throw that zalim hukmaran on the day of judgment. So then ये hadith बयान करने के बाद, this is the khutbah of Imam Hussain. अरे make शुक्र के we are Hussaini. After this hadith, Imam Hussain ने यजीद के जुर्म बयान किए, the crimes of Yazid. Imam Hussain mentioned, friend of the people,
Hazrat Imam Hussain says कि what Yazid and his follower they doing, ala inna haula'i qad lazimu ta'at ash-shaytan, they obeying shaitan, wa taraku ta'at ar-rahman, and they disobeying the order of Rahman, they disobeying the order of Allah subhanahu wa ta'ala, wa attalul hudud, और उन्होंने क्या किया, और यजीदी और उसके टोलों ने जमीन पर हुदूद शरी को मुअत्तल कर दिया, that they went against the शरीयत of Rasulullah, they crossed the limit, the had of the शरीयत of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैं एक बस मिसाल आपको देता चलूं कि यानी ये शराब है, कुरान सेज कि ये हराम है, they cross that limit। अब ये जिना है, ये हराम है, they cross that limit। अब ये जो फूड है, you get halal food and haram food also, so ये है हद, they cross that limit also, they start eating haram also। Then Hazrat Imam Hussain says, you know, wa asharul fasad, on the सरजमीन उन्होंने फसाद बर्पा किया, फसाद फैलाया उन्होंने, and then wasta'saru bil fail, then Hazrat Imam Hussain, this is the fifth crime of Yazid Palit and his followers। Imam Hussain mentioned कि wasta'saru bil fail, Hazrat Imam Hussain says कि what they did, जो बैतुल माल का खजाना है, जो माल है, they not using for the needy people, they using for themselves। So yeah, this is the जुर्म, the crimes of Yazid Palit। तो फिर मेरे मौला हुसैन करबला ना आते तो क्या किधर जाते? Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, when he mentioned these 5 crimes of Yazid Palit and his followers, then Imam Ali Muqam, Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, beautifully he says wa ana ahaqqu min ghairi, he says ke in this time, in this era, when the battle of Karbala took place, in that era, Hazrat Imam Hussain says, इस वक्त इस फितना और फसाद को रोकना जितनी मेरी ड्यूटी है उस जैसी ड्यूटी किसी की नहीं है। हजरत इमाम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि जितनी मेरी ड्यूटी है उतनी और किसी की नहीं है। अरे कुरान जिनके घर का है, हदीस जिनके घर की है, खिलाफत जिनके घर की है, इमामत जिनके घर की है, इकामत जिनके घर की है, मिंबर जिनके घर का है, हज जिनके घर का है, उम्रा जिनके घर का है, काबा जिनके घर का है, मदीना जिनके घर का है, अरे वो घर है इमाम हुसैन का। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो ये है हजरत इमाम हुसैन का खुतबा, द सरमन ऑफ इमाम हुसैन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये अल बिदाया व निहाया से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, when he came in the ground of Karbala, तो Abdullah bin Ammar, he witnessed, he said, I saw Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, मैंने आपको उस वक्त देखा जब the army of Yazid was around Imam Hussain in the ground of Karbala, and no one have guts to face Imam Hussain. Because why? He mentioned, he says, with one hit of Imam Hussain, the army of Yazid was getting into 2 pieces. With one hit. और फिर तलवार किसकी थी? इमाम हुसैन के हाथ में, मौला अली की। या अली, या अली, या अली। अरे जिगर गोशाए बतूल इमाम हुसैन, रगों में खून किसका था? मौला अली का। सर पर इमामा शरीफ किसका था? अपने नाना जान का, नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देन अब्दुल्ला बिन अमार, ही सेज, खुदा की कसम, आई टेक द ओथ ऑफ अल्लाह, आई नेवर सी एनी ब्रेव पर्सन एंड पर्सनैलिटी, and I never see any firm person and personality on the ground of Karbala, the one who saw, witnessed from his eyes the martyrdom of his children, the martyrdom of his family member, the martyrdom of his companions, but he was still firm on the ground of Karbala, and he was still fighting with Yazidi army. He still never leave the daman of haq. Furthermore, he says, I take the oath of Allah,
कि मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपकी मिसल नहीं देखा. When no one was coming to face Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, so hatta nada Shimr make announcement. He says wa yahkumu maza tantaziruna bir rajul. What you waiting for, oh the army soldiers? What you waiting for? Go and finish uqtuluhu, finish Imam Hussain. Sakilatukum ummahatukum. You want that your mother must be happy to see you back, then finish Imam Hussain. If you don't want to do that, then your mothers will cry for you. So this was, he was making announcement in the ground of Karbala. Fahamilat rijal min kulli janib ala al-Hussain wa darbahu. Phir they couldn't face Imam Hussain one by one. Then he make announcement that go around and throw the arrow and attack Imam Hussain. Then they attack Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Phir Zara bin Sharik, what he did, ala katifihil yusra wadaraba ala atikihi, then what he did, he attacked the beloved shoulder of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Phir summan sarafu ab ghode, he fell from the horse. Or phir Sanan, according to one narration, Sanan fata'anahu birramhi fawaqa'a. Jo Sanan tha, he had one spear. He stabbed Hazrat Imam Hussain with the spear. उसने अपने नेज़े से हज़रत इमाम हुसैन को मारा. फ़ज़बहहु व हज़्ज़ु रअसहु, and then he sat on the chest of Imam Ali Muqam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and then he make shaheed Imam Hussain. He cut the head of Imam Hussain. ثم دفع رأسه إلى خولي, then he sent the head of Imam Hussain to Kholi. And according to other narration, Shimr sat on the chest of Imam Hussain, and that was, you want to know, wajada bil Husayni hina qutila, how many injured mark, the sword mark and the speared mark was on the body of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. When Hazrat Imam Hussain got shaheed, salasam wa thalasina ta'natu, that speared mark, 33 speared mark. With speared, the body of Imam Hussain was stabbed with speared 33 times. And then sword mark, wa arbi'u wa thalasina darba, 34 तलवारों के जख्म थे इमाम हुसैन की जिस्म मुबारक में, on the body of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. वकाना मक्तलुल हुसैन radiyallahu an यौमुल जुमा, that was the day of Juma when Hazrat Imam Hussain got shaheed. यौमु Ashura, that was the day of Ashura. Min Muharram, in Muharram sanata ihda wa sittina, 61 Hijri, month of Muharram, 10 Muharramul Haram. The date was 10, month was Muharram, and the year was 61, and the day was Juma when Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu got shaheed. फिर आगे बहुत से हवाला जात हैं कि 62 और 63 और 64 हिजरी हजरत इमाम हुसैन got shaheed, but आखिर में लिखा है वस्सहीहुल अव्वल कि the first call is authentic, that was 10 Muharramul Haram 61 हिजरी हजरत इमाम हुसैन got shaheed. और वो कौन सी जगह थी? बिमकान मिनत तुफ, वो जगह का नाम था तुफ, जिसको कहते हैं युकालु लहू करबला, जिसको करबला कहते हैं. और फिर मिन अर्दिल इराक, कहां पर है? इराक में है. सो दिस इज द मार्टरडम ऑफ हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु. फिर बिफोर द मार्टरडम ऑफ हजरत इमाम हुसैन, द ग्रेट सहाबी रसूल, ये मैं इस पे खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला. हजरत अनस बिन हारिस आप रवायत करते हैं कि समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज इन नबनी, इंडीड दिस माय सन, यानी हुसैन, इमाम हुसैन, युक्तलु बि अर्दिन, he will be martyred on that land, on that earth, युकालु लहू करबला. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that land name will be Karbala, that place name will be Karbala. Faman shahida minkum, then Hazrat Anas bin Haris, furthermore he says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that whoever from you will be present that time, dhalika falyansurhu, then you must be with Imam Hussain.
मेरे हुसैन की मदद करना. You must be with Imam Hussain. And history witness Hazrat Anas bin Haris, he was with Imam Hussain because he remembered the Farman Pak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he got shaheed in the ground of Karbala with Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. So ये है शान कि कोई ये ना कहे कि भाई करबला में शहीद होना था इमाम हुसैन को, फिर रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं बताया. अरे रसूलुल्लाह knew the place name also. This is the shan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इसलिए the beautiful शायर says कि मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदान नहीं, सहाबियों का अकीदा सहाबियों का अकीदा हुजूर जान